Hi everyone, so today we will be discussing hormones and their mechanism of action. Okay, so what are hormones? Hormones are chemical substances in your body which help in doing particular functions, bringing about particular functions in your system. Now, hormones can either be steroidal in nature. Okay, so steroidal matlab the lipid soluble hormones, those that are derived from steroids, and they can be non-steroidal in nature or your water soluble hormones. अगर मैं steroidal hormones की बात करूँ तो सारे sex steroids मतलब testosterone, progesterone, ठीक है, फिर estrogen, these are all steroidal hormones. Aldosterone, cortisone, so adrenal cortex के जो hormones है, adrenal gland जो है हमारा, that can be divided into a corticular section and a medullary section. उसके external section को कहते हैं cortex और उसके internal section को कहते हैं medulla. ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. तो कॉर्टेक्स से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं उनको हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं. मोस्ट ऑफ दीज कॉर्टिकॉइड्स आर व्हाट दे आर लिपिड soluble. Okay, non-steroidal hormones on the other hand can be divided into amino acid derivatives, so directly derived from amino acids. So you have adrenaline and noradrenaline as well as dopamine. It is also a catecholamine. Okay, so dopamine से ही derive होते हैं adrenaline and noradrenaline. So these are your catecholamines, right? They can be peptide hormones, long chain peptides. So insulin, glucagon, or they can be folded proteins like growth hormone. Correct? So depending on the structure, it can either be just an amino acid derivative, or it can be a peptide chain, or it can be a folded protein. है ना? Think about the differences between these three. ये आपने बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में किया है. अगर इसमें डाउट है कि अमाइनो एसिड से पेप्टाइड्स कैसे बनते हैं और पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्यों प्रोटीन नहीं कह सकते, let me know in the comments. I'll make a video on it. Okay? Now let's get into the mode of action of these hormones. Okay? Now the mode of action for these two different hormones will be different because steroidal hormones are capable of getting internalized into the cell. They can enter your cell, whereas non-steroidal hormones cannot, right? So for steroidal hormones, the receptors, every hormone, see, think about this. Hormones are secreted by endocrine glands, है ना? They are secreted by endocrine glands. So now endocrine glands कहाँ secrete करते हैं? They secrete it into a bloodstream, into your bloodstream. So your blood carries the hormones. Then how will it be specific? Because blood reaches every cell, है ना? So the specificity of hormone arises from hormone receptor complexes. Every hormone will have a specific receptor, and cells that will require the hormone will express that specific receptor. Correct? So ये जो receptor है, जब hormone आके cell membrane पे उस receptor के साथ bind करेगी, we will call it a hormone receptor complex. Okay? The hormone receptor complex will get internalized completely and will go into the nucleoplasm. Once it goes into the nucleoplasm, in the DNA, there are particular segments which are known as the hormone response elements or the HREs. DNA में जो hormone response elements है, उसके साथ ये hormones फिर bind करेंगे और जिस gene sequence में ये hormone response elements है, उस particular gene sequence के transcription को increase कर देंगे और वो protein ज़्यादा बनेगा. So hormone का जो action है, वो DNA level पे काम करेगा. How? With the help of HRCs and HREs. Hormone receptor complex will go inside the cell, bind to the hormone response elements and increase transcription for the given
फॉर द स्पेसिफिक जीन, ओके। बट नॉन स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स के लिए ये इंटरनलाइजेशन पॉसिबल नहीं। तो इनमें क्या होगा, इनमें जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, now this particular receptor cannot get internalized, right? इस केस में the binding will be like a stimulus and that will activate second messengers like CAMP, cyclic AMP, calcium ions, multiple such है, which will go and increase or activate multiple kinases. Tyrosine kinase is an example. There are multiple types of kinases which then will increase the level of transcription. So the hormone itself will not go inside, cannot go inside. Instead, it creates a series of reactions or activations because of which finally transcription is increased, right? This kind of series is known as cascade activation, right? Think about platelet से blood coagulation, है ना, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनना, फिर फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनना। तो एक थ्रोम्बोकाइनेज की वजह से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, फिर फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होगा। तो वन रिएक्शन ट्रिगर्स अनदर, वन दैट ट्रिगर्स द नेक्स्ट, दैट ट्रिगर्स द नेक्स्ट। ऐसे फ्लो में एक के बाद एक रिएक्शन अगर हो तो उसे हम एक कास्केड एक्टिवेशन रिएक्शन कहते हैं। इनहिबिशन भी हो सकती है, ठीक है, बट दे आर कैस्केड रिएक्शंस। आई होप दिस मच इज क्लियर। हम हॉर्मोन्स भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। थैंक यू।